गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंदन कुमार सिंह है। आज मैं क्लास 10th के लेसन नंबर 2 जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है उसमें इंग्लिश मीडियम के सेकंड पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें हम कुछ वेरियस टाइप के नेटवर्किंग और उनके फिजिकल टोपोलॉजीज, इंटरनेट, यूजेस ऑफ इंटरनेट, इसके बारे में जो है बात करूंगा। उम्मीद है इससे पहले वाले वीडियोस को आपने अच्छे से देखा होगा और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसे ज़रूर पूछिएगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं नेटवर्किंग टोपोलॉजीज के बारे में। नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में, टोपोलॉजी, व्हाट इज टोपोलॉजी? नेटवर्क टोपोलॉजी इज हाउ अ कंप्यूटर, प्रिंटर और अदर डिवाइसेस are connected in a particular arrangement that is known as computer network topology. It describes the layout of wires, cables and routing paths, devices. These are the various type of describing layout of the networking topology. It defines the arrangement pattern in which the terminal or node are connected with each other. It means the terminal or the computer are connected with the nodes, another computer, with the help of wires. That is known as network topology. It is a pattern through which we can connect one computer to another computer. That is known as the network topology. Okay. Now, some physical topologies are here. I am describing these type of topology. And physical topology, this specific mapping of nodes of a network, the laying of wires and connection between the node and cabling system is known as physical topology. It means through which हम लोग जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जो है तारों के द्वारा जोड़ते हैं, वायर्स के द्वारा कनेक्ट करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इस टोपोलॉजी में जो है वेरियस टाइप के 7 आपके टोपोलॉजीज होते हैं। कौन कौन से हैं वो टोपोलॉजी, और जो है उनको मैंने खासतौर पे यहाँ पर एक इमेजेस, एक पिक्चर्स के द्वारा भी जो है समझाया हुआ है, चित्रों के द्वारा समझाया हुआ है। इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। ओके ओके, नाउ फर्स्ट वन इज पॉइंट टू पॉइंट। व्हाट इज पॉइंट टू पॉइंट? हियर यू सी वन कंप्यूटर कैन कनेक्ट टू अनदर कंप्यूटर थ्रू अ वायर, that is known as point to point topology. Okay, this type of topology, this is the simplest topology which exists, the permanent connect between two end point. Okay, one end point and second end point, that is known as point to point topology. Okay, these are the microphone or public address system, and these type of topologies are connected through one computer to another computer, and these computers are known as points. Okay, these computers are known as points, so this is called point to point topology. Okay, next one is bus topology. As you here see that a single wire are connected more than one computer in it, that topology is known as bus topology. It is also a simplest topology where all computers are connected with a single wire. This topology is known as bus topology. If various type of thing, if this wire are got burst, ठीक है, खराब हो जाती है, so all topology are gone. Okay, if one node are burst, every computer are keep rotating, keep working. But if this type of wires are burst, each and everything got gone. Okay, this topology is known as bus topology. Third one is ring topology. What is ring topology? As you here see that this image, this picture are this type of topology are connected with each other, each one computer to another computer through a wire, and this topology are connected in the round shape. Okay, this round shape are known as ring. So जो इसकी बनावट होती है उसके आधार पे अगर हम देखें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिंग टोपोलॉजी कहते हैं, because each and every computer are connected to the wire in the round shape, in the ring shape. So that's why this topology is known as ring topology. Okay, next one is
star topology. What is star topology? As you see that this type of topology had the single hub, main system called hub. It can connect all the computer, all the nodes into it, and it when a node can send any information, it goes first into the hub. Hub can see where the data or information have been sent, and hub can send only that endpoint where the data has been travel, and so this जो डाटा होता है वो बिल्कुल सही तरीके से अगले कंप्यूटर तक पहुंच जाता है. ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो है ट्री टोपोलॉजी. ट्री टोपोलॉजी जो है यहाँ पे मैंने एक फिगर के माध्यम से बताया है आपको. फिगर बहुत ध्यान से समझिएगा. ईच एंड एवरी नोड आर कनेक्टेड through the root node. Root node means main computer, from where each and every computer are connected through the wires. These type of topology are known as tree topology. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप इसकी बनावट देख रहे होंगे, तो ये जो बनावट है बिल्कुल एक पेड़ की तरह है. ठीक है, सबसे पहले इसके जो जड़ होती है, फिर उसके बाद रूट्स निकलते हैं उनके, और उसके बाद फिर उसमें से रूट्स निकलते चले जाते हैं, तो बिल्कुल पेड़ जैसा दिखता है. इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? ट्री टोपोलॉजी कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्री टोपोलॉजी. ओके, नेक्स्ट वन इज मेश टोपोलॉजी. मेश टोपोलॉजी मीन्स दैट जस्ट लाइक सी दिस इज नोन एज पॉइंट टू पॉइंट, P to P. Okay, and this topology is known as, this topology here from here to here, here to here, it is known as bus topology. It is known as bus topology. It means more than one topology are inbuilt into the single topology are known as mesh topology. Okay, this type of topology are known as mesh topology. It is a topology all the nodes are connected to each other in some way other. One node may be interconnected to the number of node in that network. Okay, one node can connect with more than one system, one computer. So that's why each and every node are connected with each other. Okay, this is known as mesh topology. Last one is hybrid topology. What is hybrid topology? Hybrid means मिला-जुला, interconnected. Okay, it means जो है यहाँ पर एक से ज्यादा जो है टोपोलॉजीज को हम एक साथ इनबिल्ट करते हैं. क्या करते हैं? एक से ज्यादा टोपोलॉजीज को हम लोग एक साथ क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं. तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं. ओके, तो इसमें जो क्या होता है कि इसमें जो टोपोलॉजी मोर देन वन टोपोलॉजीज आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी. ओके, now we are talking about some internet. What is internet? As you know, internet is a various type of connections through which we can send or receive our data from one place to another place. Internet is an organization where all type of information are stored. It has some central computer. It has some various type of servers, and that server can send the requested data that was requested by the client are known as internet. Okay, what are the uses of network? Some uses of network are various types. Just like business use internet to provide the access of complex databases, because each and every organization has their some databases, and that are stored into some special servers, and internet can find way to access that network that are stored on other city or other country, and we have to find out that data in a very short notice. So these type of things are known as uses of networking, internet. Okay, media and environment companies use the इंटरनेट टू ब्रॉडकास्ट ऑडियो एंड वीडियो इंक्लूडिंग लाइव रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स. आप जो टेलीविजन प्रोग्राम्स वगैरह भी देखते हैं उसका भी जो है टेलीकास्ट किसके मेथड से हो सकता है? जो है इंटरनेट के मेथड से हो सकता है. दीज आर द सम टाइप ऑफ यूजेस ऑफ इंटरनेट. व्हाट इज फाइल सर्वर नेटवर्क? फाइल सर्वर नेटवर्क is a type of network
where have the central file storage capacity which allows all user to work from the same set of the database, provide easy backup of critical data. Okay, it means a file can store on a server computer and all nodes are access that computer, access that data, access that file to work to do the work on the same file at the same time. That is known as file server network, and this type of work are known as file server work. Okay, so that is all for today. Let's meet in another video. Thank you.